So let us start our class today. Yesterday we studied about paradigms. In the previous class we studied about paradigms and we have studied about significance level, confidence level, and paradigms. In the previous class we studied about paradigms. Okay, now I have checked, the voice is clear. दोस्तों पैराडाइम्स की जब बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, पैराडाइम्स मीन्स इट इज अ फ्रेमवर्क, अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, एंड हाउ डू यू लुक एट समथिंग, हाउ डू यू डू समथिंग, हाउ और द approach of doing something, the way of doing something, that is called paradigm. And the framework of doing things, and once you want to do research, then what is the framework of doing research? How do you do research? Today we are going to discuss those frameworks, those different paradigms of research. As I discussed in the previous class, the different frameworks or different ways of doing research are all the branches or all the systems of the branch metaphysics. Metaphysics is a branch in which you study about abstract ideas, and metaphysics teaches us about ontology, axiology, epistemology. All these things are parts of all the paradigms of research. And the first one, ontology, it states that you search for truth. Before starting anything, you believe in its existence. So belief in existence of whatever you are searching for. So when you believe that the thing that you are searching exists, that is called ontology. And once you believe what is true or the thing that you want to search exists, then you want to find out the knowledge to find it. You want to know the knowledge to find what you want to do research for. So search for knowledge. This is epistemology. Epistemology is the search for knowledge. And once you have come across the knowledge portion, then you want to know the methods by which you can do the research upon. So methodology are the various methods and systems or techniques by which
you want to do research. The various methods, the techniques that you are going to apply to do your research work. And methods are the actual techniques, the procedure that you are going to follow, and which is the various data collection, actual data collection, the sampling techniques, the statistical tests that you do. All these are the methods of doing research. I hope now there is no problem as far as voice is concerned. So all these are various paradigms. I hope you are making notes. Now let us move forward. All these are paradigms of research that we have just studied. Now the next topic that we are going to study is variable. What is a variable? A variable is an entity which you are studying for your research work, and something whose values varies. Its value may be quantitative, value may be qualitative, but it varies. So something whose value, it's a construct whose values are different at different times. So you can assign a set of values to that variable. That may be quantitative, that may be qualitative. Right? Now, when I talk about variables are of 5 types. Primarily, if the examiner asks you how many types of main variables are there, so there are 4 types of variables. One is independent variable. Second is dependent variable. Third is intervening variable. And the fourth is control variable. These are the 4 types of variable which we study. Examiner sometimes asks in the exam, how many types of variable do you study in research? So you study 4 types of variables in research. There is a 5th one also, which is called extraneous variable. But you don't study this variable. The researcher has no control over this variable. That is why if the examiner asks you how many in all there are types of variables which you study in the research work, there are 4 types of variables, right? Now, let us discuss all these variables one by one. First, independent variable. Independent variable is that variable, it is also called experimented variable.
It is also called manipulated variable, experimented variable, manipulated variable. Let me write it on another page. Independent variable. Also called manipulated, experimented, causative, variable. These are the different names of independent variable. Now, what is this variable? See, when you are doing research work, suppose let us say experimental research, or you are doing ex post facto, or suppose you are doing correlation, correlational research. What you do is you make changes in a variable. And you study the effect of those changes on another variable which is called dependent variable. Why is it called dependent variable? Because it is dependent upon the change made in the independent variable. Independent नाम इसका क्यों है? Because you do not study this variable. You make changes to this variable. And whatever changes that you make to this variable, you study the effect of that change into this variable. So this is the observed variable. This is the affected variable. This is the effective variable. You study the effect of the change on this variable, and change is done on this variable, and you study that change on this variable, the effect of that change. That is why it is called affected variable, observed variable, studied variable, dependent variable. Why dependent? Because it is dependent upon changes made on independent variable. So this is independent variable and this is dependent variable. Suppose I give you an example. Very good evening all of you. I could not spell out names today of people because I was a little overworked today because of the server problems and the delay in the class. So now I can welcome all of you. You're most welcome, all of you. Good evening. I'll just name some of them: Govind, Jat, Sunil, Ayushi, Padmakshi, Samta, Kuldeep, Urvashi, Sania. A very good evening and a very warm welcome to all of you. So, what we were talking about was independent and dependent. Let me give you an example. Suppose I am undertaking a study where I am studying the effect of money on the behavior of a person. मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे आदमी के पास पैसा आता जाता है वैसे वैसे उसमें गुरूर आता जाता है. अब as the money increases, as the economic condition of a person increases, his behavior towards people changes. Now I am studying the behavior of the person. The observed variable is behavior of the person. ये important topic है. इस पर अभी 2020 में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है लगभग, almost every shift, and 2019 also. पिछले कई सालों से आप देखेंगे ये क्वेश्चन आता रहा है. So what I was talking about was that I am studying about change in economic condition
and the effect on change in behavior. So what I am doing is I am checking the changes made in economic condition of a person and what the effect that economic condition change makes on the behavior of that person, that I am studying. So this is the independent variable and this is the dependent variable, right? So independent variable, what I'll do is I'll check people with less money and their behavior. Then I'll suppose economic condition of that person changes, his salary increases and his economic condition, his money value changes. So what is the change in behavior that I'm studying? So these are the two things, independent variable and dependent variable. Now what is, there's another thing which we studied, the third thing, intervening variable. Now what is intervening variable? Intervening variable is a variable, something which intervenes the changes made in the independent variable and the effect done or proposed on the dependent. Intervening variable intervenes to this effect. So इसको एक तरह से कहेंगे कि बीच में ये उसके कॉजिटिवनेस को डिस्टर्ब करेगा. So intervening variable actually intervenes between independent and dependent variable. It affects the effect of changes in independent variable to the dependent variable. So that effect that you are studying, it affects the effect. Affects the effect. वो जो इस पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, उस इफेक्ट पर को अफेक्ट करता है, चेंज करता है. वो कैसे? एक और एग्जांपल देता हूं. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि क्लासरूम का एग्जांपल देते हैं. एक टीचर अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज करता है और चेक करता है कि उस टीचिंग मेथड्स की वजह से स्टूडेंट की लर्निंग में क्या फर्क पड़ रहा है, राइट? अब मैं इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? चेंज इन टीचिंग मेथड्स. एंड व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल? द लर्निंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स. लर्निंग बिहेवियर कहेंगे या लर्निंग कहेंगे, स्टूडेंट को कितनी लर्निंग हो रही. अब इंटरवीनिंग क्या है इसमें? अगर मैं कितना भी टीचिंग मेथड चेंज कर दूं, उसका इफेक्ट वहां पर जा ही नहीं रहा हो, रास्ते में कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है. जैसे क्लास में शोर, नॉइज इन द क्लास, क्लास डिसिप्लिन. अगर क्लास में इतना शोर होगा या क्लास डिसिप्लिन नहीं होगा या क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं होगा, तो मेरा टीचिंग मेथड चेंज करने का जो चेंजेस हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल तक अफेक्ट नहीं कर पाएंगे और उस कॉज का वहां तक रिजल्ट नहीं आ पाएगा. सो दैट इफेक्ट हैज बीन अफेक्टेड बाय indiscipline. So classroom discipline or classroom management is intervening variable in this example. And the last one is control variable. I'll explain this also. Now what is control variable? Control variable is a variable which is an ideal condition by which or through which you check the effect. जैसे आप कहते हो ना लर्निंग इफेक्ट, आपने टीचिंग मेथड चेंज किया है ना और फिर आपने लर्निंग को देखा, तो कंट्रोल वेरिएबल एक्चुअली गिव्स यू द स्टैंडर्ड, द कंट्रोल ऑफ द चेंज. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं टीचिंग मेथड चेंज किया, राइट? मैंने लेक्चर मेथड से डिस्कशन मेथड पे चेंज कर दिया या लेक्चर मेथड से मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन पे चेंज कर दिया. तो ये जो चेंज है इसको हम कहते हैं टीचिंग मेथड्स चेंज किए. किससे चेंज किए? कंट्रोल वेरिएबल क्या है, वो कौन सी चीज है जिससे हम चेंज कर रहे हैं? इसमें कंट्रोल वेरिएबल यहाँ पे होगा. जैसे अगर हम शुरू में गुरुकुल की बात करें तो कन्वेंशनल टीचिंग क्या होती थी कि कोई टीचिंग मेथड नहीं लगाना, टीचर आता था और पढ़ाता था और उस पढ़ाने पर जो भी लर्निंग होती थी वो एक स्टैंडर्ड था, एक आइडियल कंडीशन थी.
और उसके हिसाब से अब हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो उस कंडीशन को देखते हुए उस पर चेंजेस कर रहे हैं। सो कंट्रोल वेरिएबल हियर इज कन्वेंशनल टीचिंग मेथड एंड द लर्निंग फ्रॉम दैट। तो यहां पर इस एग्जाम्पल में जो कन्वेंशनल टीचिंग है वो कंट्रोल वेरिएबल। एंड व्हाट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल? लास्ट वन, extraneous variable is a variable over which the researcher has no control over, because the researcher does not or cannot control this variable. अब वो कैसे? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होती। जैसे क्लासरूम की बात करें तो अगर मान लीजिए किसी दिन स्टूडेंट की तबीयत ही खराब है, लाइट ही चली गई, आज भी हुआ था, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है ना, सर्वर यहाँ से सर्वर प्रॉब्लम हो गया, यूट्यूब में सर्वर हैंग कर गया, तो यहाँ से क्लास वहां तक आप तक पहुंची नहीं। अब इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है, इसमें हमारा कोई जोर नहीं है ना। लाइट चली जाए तो क्या कर लेंगे, माइक खराब हो गया तो क्या कर लेंगे, मशीन क्रैश हो गई तो क्या कर लेंगे, बाहर ट्रांसफार्मर उड़ गया तो क्या कर लेंगे, है ना। ऑल दीज आर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स ओवर विच यू और रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर। सो व्हेन यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर एनी वेरिएबल, वो चीजें एक्सट्रेनियस वेरिएबल होती हैं, और इसको हम कोशिश करते हैं कि इसका इफेक्ट, अच्छा ये आ गया तो आपकी पूरी रिसर्च वर्क को अफेक्ट करेगा, आपकी पूरी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को स्टडी को अफेक्ट करेगा। तो हमारा इस पे जोर तो नहीं है, लेकिन हम इसको ज्यादा से ज्यादा ये देखते हैं कि इसका इफेक्ट इस पूरी रिसर्च वर्क पे ना पड़े, कम से कम हो, और जो भी इफेक्ट है वो हमारे सामने डेटा में रहे कि ये सारा डेटा इस एक्सट्रेनियस वेरिएबल के वजह से, इसकी ये कंडीशंस की वजह से है। जैसे कहते हैं ना, कंसीडरिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, तो जो कंडीशंस पर्टिकुलर हैं उसके हिसाब से हमने देखा। तो ये 5 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंट्रोल, इंटरवीनिंग और एक्सट्रेनियस। जैसे अभी एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर कंट्रोल वेरिएबल, अब कंट्रोल वेरिएबल एक्चुअली का मतलब क्या होता है, दोबारा समझा देता हूं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कंट्रोल वेरिएबल के लिए, आयुषी कंट्रोल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो आपके इस पूरे सिस्टम को इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट में जो इफेक्ट आप पढ़ रहे हो, उस इफेक्ट का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कंट्रोल वेरिएबल है। जैसे क्या होता है, एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसपे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हम कहते हैं कि ये लड़का सुंदर है, मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं, ये लड़का सुंदर है। अब सुंदरता का एक पैमाना है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। सुंदर किसको बोलते हो, है ना। अगर स्किन का रंग गोरा है, फीचर्स शार्प हैं, है ना, तो वो हम उसको सुंदर की कैटेगरी में कहते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी वैसे तो ये कलर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है कि आप किसी गोरे को सुंदर और काले को असुंदर बोलो, तो इफ यू से दैट ही इज नॉट ब्यूटीफुल एंड ही इज ब्यूटीफुल। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर कोई बहुत काला, बहुत ज्यादा काला फिलूटा आदमी, और फीचर्स भी अच्छे नहीं है, उसके फीचर्स भी शार्प नहीं है, और किसी ने उसको कह दिया देखो ये सुंदर है, तो आप कहोगे कहाँ सुंदर है। अब आप उसको सुंदर नहीं मान रहे, आपके नजर में सुंदरता का एक कंट्रोल वेरिएबल है, एक मेजरमेंट है, एक स्टैंडर्ड है कि सुंदर किसको बोलते हैं, दैट इज माय कंट्रोल वेरिएबल। और उस कंट्रोल वेरिएबल के हिसाब से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप चलता है कि एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो और उसमें चेंजेस कहते हो, तो वो चेंज क्या है, इसके हिसाब से जो चेंज हुआ, राइट। सो कंट्रोल वेरिएबल इज योर स्टैंडर्ड वेरिएबल, योर measurement standards where you study changes. So when you say something is changed, that is changed over control variable. जैसे मैं कहता हूं ना, मैं मेरी टीचिंग मेथड चेंज किया, तो हम जब कहते हैं टीचिंग मेथड चेंज किया, तो क्या चीज से चेंज किया, वो क्या चीज है जो नया कर दिया आपने। अब कोई चीज नई है तो पुरानी कौन सी है, वो है कंट्रोल वेरिएबल। अगर आप कहते हो ये मेरा नया है, किससे नया, है ना, आई एम बेटर फ्रॉम whom, so that is control variable. तो आप किसी चीज को जब कंपेयर करोगे, मैं बेटर कर रहा हूं, मैं चेंज कर रहा हूं, मैं नया कर रहा हूं, तो नया किसी पुराने से ही तो नया बनेगा, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल। आई होप नाउ इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू।
नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. तो जो भी बेसिस ऑफ, बिल्कुल, one of the students said basis of comparison. Yes, it is the basis of comparison. It's a standard measurement, standards of comparison. तो दोस्तों, वेरिएबल आपका अब टॉपिक हो गया. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. आज आपका एक टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे जो रह गए थे पॉइंट्स वो करा देंगे. इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मतलब क्या है? देखिए, कई बार क्या होता है कि यू आर डूइंग सम रिसर्च इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट? हमेशा ऐसे ही करते हैं हम. अगर कॉमर्स पे रिसर्च कर रहे हैं तो कॉमर्स सब्जेक्ट पे ही करते हैं. अगर हम आर्ट्स में कर रहे हैं या विजुअल आर्ट्स में कर रहे हैं, फाइन आर्ट्स में कर रहे हैं या हिस्ट्री पे कर रहे हैं, साइकोलॉजी पे कर रहे हैं, तो हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर एरिया, जो भी हमारा इंटरेस्ट का एरिया है, जो भी हमारा रिसर्च का एरिया है, हम उस पर रिसर्च करते हैं. लेकिन यहां पर डिसिप्लिन शब्द का मतलब, इंटरडिसिप्लिनरी में यहां पर जो डिसिप्लिन वर्ड है, ये जो वर्ड है डिसिप्लिन, यहां डिसिप्लिन का मतलब है स्ट्रीम. साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम. सो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मतलब एक ऐसी रिसर्च विच इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ मोर देन वन स्ट्रीम्स. अगर कोई रिसर्चर while doing his research work in one subject takes help of knowledge of other subjects, if he has to study other subjects also to study his research subject, then that research process is taking care of or taking into account other subjects also. That is called interdisciplinary research. The focus is on a holistic approach. Holistic मतलब एक पूरा कंप्लीट ओवरव्यू. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एक फंडामेंटल रिसर्च का एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए मैं किसी केस स्टडी पे काम कर रहा हूँ, या मैं मान लीजिए कोई हिस्ट्री की रिसर्च कर रहा हूँ, और हिस्ट्री की रिसर्च में मैं कुछ समय पहले के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ रहा हूँ, उनके वे ऑफ लिविंग को पढ़ रहा हूँ, और उसको कंपेयर कर रहा हूँ मान लीजिए प्रेजेंट से. अब उसमें मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी की भी जरूरत पड़ रही है, उसमें मुझे डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी की भी जरूरत पड़ रही है. तो मैं जूलॉजी में डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी मतलब साइंस के सब्जेक्ट की भी नॉलेज को काम में लूंगा, मैं साइकोलॉजी भी काम में लूंगा. सो व्हेन यू आर inculcating more than one subjects in one particular research, then that research is called interdisciplinary research, क्योंकि the idea is to make a holistic, a wholesome approach of understanding of that particular topic, कि उस टॉपिक पर हमें डिटेल में उसके आसपास की चीजों का भी होलसम अप्रोच हो जाए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक which includes more than one disciplines, more than one streams, more than one subjects. That is called interdisciplinary research. और अभी ये जो word मैंने बोला holistic approach, what is this holistic approach? Holistic मतलब wholesome, complete, overall. और ये जो holistic word है, इसको propound किया था जैन स्मर्ट ने. अभी इसको भी मैं लिखवाऊंगा आपको. holistic approach जो है ये, I hope you are copying the notes also. So holistic approach means to study the whole. When you say holistic approach, that means to study whole. This concept that whole cannot be analyzed in parts and study of whole parts taken together is formulated by Jan Smuts. Yes, Ayushi, you have understood it clearly. Next, we are going to study Erklaren method. Erklaren method is actually a term given by Max Weber, and this term means, Erklaren means explanation.
it is usually done in science, core sciences, natural sciences subject, physics, chemistry, biology. And what does it mean? Erklären means when you are explaining something in science, the method of giving a complete explanation of something, such as we do it in science, that is called Erklären method. And Max Weber, a German sociologist, propounded this word. He also propounded another word, Verstehen method. Verstehen means meaningful understanding. सोशल साइंस में मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग होती है और साइंसेज में एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग होती है. तो मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है परसेप्शन देखना, कि जब आप हिस्ट्री या साइकोलॉजी या फिलॉसफी पढ़ रहे हो तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन से ज्यादा उसकी समझ, उसकी मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग, उसका परसेप्शन, आप उसको किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहे हो, क्या उसकी बात समझ रहे हो, अपने आप को उसकी जगह रख के देख रहे हो, दैट इज वर्स्टेहन मेथड. सो Erklären and Verstehen are two methods given by these German sociologists. And Erklären gives you scientific explanation and Verstehen method gives you social science meaningful understanding. So that would be all for today. So many terminologies that you learned from me, and rest will be done in the next class. We will be studying more in the coming classes. You can take a screenshot, you can copy notes also. So that will be all for today, friends. Thank you so much. See you tomorrow in the next class.